Hey, so good day for shorters. I had mentioned in my yesterday's post market that I was looking for a gap down, which happened. Also looking for these levels, so not very surprising. The structure in the morning was really good for shorting, so was interested. Also was short from had a view of shorting the market from yesterday. So took my trades around 10 o'clock. This is the chat where I shared this around I think 10:30. I'm not really sure. After I took my trade, I think I shared this, and at that point of time, Nifty was around 17,690 levels. This is a group where I've shared this. The stop loss also was mentioned, which was 10 high. I usually followed Heikinishi, so I think I'm not really sure if I mentioned 15 minutes. Oh, I didn't. So yeah, 10 high, 15 minutes. Or you can also look at this. This is like my bread and butter of trading in 3 minutes. That is the reason I look for 3 minutes. I look at 3 minute charts, which is basically volumes. So if you look at this, the only good volumes which came was around this level, which was around again the same stop loss, and this high was never broken. So yeah, so shared this trade live before it happened, and this is my order book. The whole point of this video was to show you if I actually trade. So I took a trade around, say, imagine I've just taken one lot each. So this was more like hedging for one lot. So 17,700 call. I took at say 60.9 and exited 30% at 35. Now at 1 o'clock I shared an idea on my YouTube channel. I don't share ideas now on TradingView, which was basically selling below this. Stop loss was this high, which again, if you look at this 30-point stop loss, and almost the low was 615, almost gave you 100 points. So 1:3 kind of a trade. So though if you look at my video, I clearly mentioned that I am looking for a scalp shot. Hence, if you see this, so this was my reference. If you're watching my post market videos, you know what this reference is. So I was expecting, that is the reason I gave you a scalp shot, because I was expecting this to go back, which I think it did partially. So yeah, so this again I exited 30% at 35. Then I entered when this 1 o'clock low was broken by 1:15. So this again proves that I actually take my trades. I already had 70% of my trades from morning, so I didn't go heavy, and I was looking for a scalp. So I exited that 17,700, which I took at 61 at 23, the 70%, and the fresh ones which I took at 128, I exited around, I don't remember, 35. So this was basically because I was expecting a kind of a up move from there, according to my reference, which also happened. But when I was looking at the up move, it wasn't really very strong. So I decided to do some scalping again with less lot sizes again. So I think I'm sorry about this. I took a awesome screenshot of my order book. So sorry about this. So yeah, 35. I entered at 35, exited at 23, and if I'm not sure if the market. Yeah, so and market closed at 326. This was my last order, exiting this at 23, entered at 35, and this was my first order, 10:08 a.m. So basically, this is to tell you that all are one lot sizes. This is to tell you that I actually trade my views. So my view yesterday, which I shared in post market, was gap down. Was looking for shorts. This structure was beautiful. So and my system trades also were short in the morning. So gave this trade live before it happened around 10:30. If you're in the group, you know that you can probably see this, and it also says 7 hours ago. So yeah, and this was my idea, 1 o'clock idea, which also gave 1:3 during market hours. Shared this also live around 1 o'clock, 1:15 I think. Took this trade also 1:15. I was already short in the market. I had 70% of my trades, but I did not exit because of this, and I took new trades here. So yeah, I'm not going to do this every day. The whole point of this is to tell you that I'm actually a trader.
So I trade, and yes, so this is the structure, the main reason for shorting this, and of course my systems, which I can't really logically explain. Coming to Bank Nifty did not trade. Coming to tomorrow's view, so I am expecting a gap down again tomorrow, especially in Bank Nifty. If there is no gap down and if it opens gap up, I will look for shorts. If there is a gap down, I will not look for shorts. I will look for longs. But I am looking for 1700, 17150 to come, but not this week. Probably next week or mid of March. I don't know. But I will not look for if it cap downs tomorrow, I will not look for selling opportunities. I will look for buying opportunities, and I think it will give you ample time to buy tomorrow. It won't be in a hurry. Probably the first candle will be, but after that, I think it will give you a lot of time to, it will settle down and give you ample opportunities to buy in the market. But let's see how it opens, how it closes. I don't know, but my guess is it should cap down. Bank Nifty should cap down at least. Looking at the closing, it should at least cap down tomorrow. देखते हैं आज अच्छा दिन था। मैं शॉर्ट था मार्केट में। अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बोला था कि ये गैप डाउन होगा, और ये गैप डाउन हुआ और मेरे सारे लेवल्स एटलीस्ट मीट हो गए नियर के। तो बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड नहीं किया। निफ्टी में मैंने अगर आप चैट पे हैं तो कभी कभी मैं आता हूँ चैट पे, और मैंने आज शेयर किया था ये 10:30 के आसपास शायद मैंने ट्रेड लेने के बाद शेयर किया था। ये स्टॉप लॉस था, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया टाइम फ्रेम। स्टॉप लॉस था 10 o'clock का हाई, 15 मिनट हाई कनिशी। और रीज़न ये मेन 2 रीज़न थे। एक मैं शॉर्ट था मार्केट में, और दूसरा रीज़न ये था कि 3 रीज़न है। तीसरा रीज़न था कि सिस्टम ट्रेड्स में आया था मेरे, और ये जो कि मैं इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ ये 3 मिनट वॉल्यूम्स के लिए। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम कैंडल बना था 10 बजे से पहले, और उसका हाई नहीं टूटा था, तो उसका हाई मेरा स्टॉप लॉस था। अगर इसका हाई देखेंगे तो क्या है, ये 7733 मैंने दिया हुआ है स्टॉप लॉस, 77736। तो उसका हाई मेरा स्टॉप लॉस था। और इस टाइम जब मैंने ये दिया था शायद 690 चल रहा था ये निफ्टी शायद। अच्छा, ये मेन पर्पस ये है आज का वीडियो का कि मैं ट्रेड करता भी हूँ या ऐसे ही मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ या सिर्फ आइडियाज़ देता हूँ। तो मैं ट्रेड करता हूँ, और क्योंकि आज मैं प्रॉफिटेबल क्लोज हुआ मैंने मैं दिखाता हूँ और थोड़ा फ्लेक्स करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अज्यूम कीजिए सब एक लॉट है। 1700 मैंने बेचा था 10 के आसपास 61 पे, 30% मैंने निकाल दिया 35 पे। और फिर 1 बजे मैंने एक आइडिया शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, ट्रेडिंग पे नहीं शेयर करता मैं अब, कि इसके नीचे बेचूंगा, इसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपने ये भी फॉलो किया हो तो ये तो मैं हर दिन देता हूँ चैट पे, तो मैं कभी कभी आता हूँ, ये तो मैं हर दिन देता हूँ। अगर ये भी फॉलो किया होता आपने, अगर सेल भी नहीं किया होता, तो अगर आप बाय करने की कोशिश कर रहे होते, अगर एक बार इसका लो टूट गया तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एक वो कर सकते थे, पोजीशन साइजिंग कम कर सकते थे या कुछ और कम कर सकते थे अपना रिस्क कम करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याल से 30 पॉइंट्स का रिस्क है, और उसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स दिए। तो ये एक और आइडिया था। अब इसको मैंने ट्रेड किया, हाँ जी किया। ये रहा 128। ये मैंने नए फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ले रखे थे, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी जो 60 पे चल रहा था उसको भी मैंने नहीं निकाला, 70% वो भी चल रहा था मेरा। फिर मैंने इन दोनों को, इसको 23 पे निकाला, एग्ज़िट किया, और इसको मैंने 35 पे एग्ज़िट किया 43 वाले को। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने बोला स्कैल्प बाय है ये, सॉरी स्कैल्प सेल है ये। तो ये रेफरेंस था इसका। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये वीवैप चाहेगा, तो ऐसा ही हुआ। पर ये पार्शली गया वीवैप, तो मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था इस मार्केट में। तो मेरे को ये यूजुअली स्कैल्प में जब बोलता हूँ तो मैं बाय करने के लिए नहीं बोलता, मैं एग्ज़िट करने के लिए बोलता हूँ। तो मेरा ये एग्ज़िट यहाँ पर इसलिए था। अब मैंने थोड़ी बहुत और उंगली करी बाद में जाके, जब ये मेरे प्राइस पे आ गया वापस। तो अगर आप देखेंगे तो 650 तो मैंने ये रखा था, ये सेल किया मैंने वापस 230 पे, जब मुझे थोड़ी वीकनेस दिख रही थी यहाँ पर, जब ये ऊपर आ रहा था तो मैंने उसको सेल किया कितने पे, 35 पे वापस, और 23 पे निकाला। लास्ट ट्रांजैक्शन 3:26 PM, और पहला ट्रांजैक्शन 10:08 AM। अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट फॉलो करें, मैंने हमेशा बोला है कि ट्रेड्स 10 बजे के बाद लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, समझ में आता है, थोड़ा और डेटा रहता है, स्ट्रक्चर का पता चलता है। और 10 भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 10 o'clock 1 आवर कैंडल का क्लोजिंग देता है।
तो पर इस बार मेरे पास अच्छा खासा स्ट्रक्चर था, इसलिए मैं अंदर चला गया और आरआर बहुत अच्छा था 10-8 पे। तो ये है मेरा ऑर्डर बुक, देख लिया आपने कि मैं सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ट्रेड भी करता हूँ। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब कल क्या होने वाला है, मेरे ख्याल से गैप डाउन होना चाहिए। अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो मैं सेल करूँगा, अगर गैप डाउन हुआ तो मैं सेल नहीं करूँगा, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखूँगा। मैं चाहता हूँ निफ्टी स्पॉट 1700 आए, 150-100 आए, उसके बाद मैं अच्छे खासा एक बाइंग के लिए देखूँगा। तब तक ज़िगज़ैग रहना चाहिए मार्केट, और कल का मेरा यही प्लान है। थैंक यू।